हेलो। हाँ, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैरियर। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिस्कस कर लिए थे डायोड्स और डायोड्स के बारे में, डायोड्स के फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के बारे में। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले थे लाइक हाउ डू डायोड्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर। हम डिस्कस किए थे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में भी डिस्कस किए थे डायोड के। तो उसके बाद फॉरवर्ड वॉइस में क्या होता है, डिप्रेशराइजेशन कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, वे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है डायोड की, उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आज क्या डिस्कस करेंगे, आज डायोड का कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, हाउ डायोड्स आर अप्लाइड इन फिजिकल वर्ल्ड। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, पहले वी विल डिस्कस रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स क्या होता है, रेक्टिफायर्स का पहला डेफिनेशन है, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। एसी टू डीसी is known as rectifiers. So rectifiers convert AC waveform into DC waveform. So rectifier को जो बनाने के लिए प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या होता है, डायोड्स होता है। There are two types of rectifiers for single phase AC. There is known as half wave rectifiers. Another is full wave. And full wave is again classified into two types. One is center tap. Another is center tap. Another is full bridge. Full bridge rectifier. In half wave rectifier, what happens? Half wave rectifier only converts one, uses only one diode, एक ही डायोड यूज करता है और एक ही हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। इन फुल वेव देयर यूज टू डायोड्स इन सेंटर टैप, टू डायोड्स इन सेंटर टैप uses two diodes, it conducts both half of the cycles। मतलब अगर सेंटर टैप होगा रेक्टिफायर, सेंटर टैप रहेगा कि पूरा फुल ब्रिज। तो फुल ब्रिज देयर आर फोर डायोड्स। In center tab there is have like two diodes and we will discuss the structures। हम फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम वगैरह डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल क्या है, हाफ वेव में एक हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा, फुल वेव में इट रेक्टिफाइज टू हाफ साइकिल, मतलब दो हाफ साइकिल जो होगा तो उसको रेक्टिफाई करेगा। और सेंटर टैब में दो डायोड्स यूज होंगे और फुल वेव जो होता है, फुल वेव ब्रिज जो रेक्टिफायर होता है उसमें हम चार डायोड्स यूज करेंगे। तो हाफ वेव पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, इन एसी देयर इज ए टू हाफ साइकिल्स इन एसी करंट। एसी करंट इज लाइक दिस इज नोन एज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नोन एज नेगेटिव हाफ साइकिल। इन हाफ वेव इट इज रेक्टिफाइज ओनली वन like this। In full wave it rectifies both half cycles like this, a positive negative side discarded। In full wave both cycles are rectified। ऐसे this is half wave output, दिस इज फुल वेव आउटपुट। अब हम हाफ वेव और फुल वेव का रेक्टिफायर का सर्किट देखते हैं। हियर देयर इज ए ट्रांसफार्मर फॉर आइसोलेशन पर्पस। दिस इज 1:1 ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कभी। हम एसी इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर में, इधर म्यूचुअल इंडक्शन में जितना वोल्टेज इधर होगा उतना वोल्टेज ही कंडक्ट करेगा। and that p side is connected to this and negative side is connected to this and load is connected across this is circuit of half wave rectifiers। here one diode is only used। हमारा इधर क्या है, एक ही डायोड यूज हो रहा है। तो क्या होगा, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल एनोड इज कनेक्टेड, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा। लेट्स सपोज सी दैट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल what happens, here there will be positive voltage, here will be positive voltage and here also positive voltage will be there and positive side connected to p and negative side is connected to n। then diode will be in forward bias। forward bias में होगा तो क्या करेगा, forward bias it when there is more voltage than barrier voltage it acts as short circuit। मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में क्या करता है, अगर बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। then this circuit will become like this and there will be output voltage whatever voltage is in transformer। then यार V होगा तो इधर V होगा,
तो इन पॉजिटिव साइकिल द डायोड हैज सेम वोल्टेज एज इनपुट, इनपुट में जितना वोल्टेज होगा आउटपुट में उतना वोल्टेज होगा. इन नेगेटिव साइकिल व्हाट हैपेंस, in negative half cycle there is a negative side connected to p type of material and positive side is connected to n type. It is reverse bias. So in reverse bias there will be very minute current, like no current, and it behaves like open circuit. Diode behaves like in forward bias behaves like short circuit, and reverse bias it behaves like open circuit. There will be no current flowing through diode. तो डायोड का फॉर रिवर्स बायस में क्या होगा, ओपन सर्किट का तरफ बिहेव करेगा, देन देयर विल बी ओपन सर्किट हियर, सो नो करंट विल बी कंडक्टेड थ्रू आउटपुट, आउटपुट में देयर विल बी नो करंट, so output पर there is no current, but there is no current, so output में क्या करेगा, in negative cycle there is no current. Again when positive cycle starts then it becomes forward bias, डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फिर से करंट कंडक्ट करेगा, फिर से नेगेटिव साइकिल में कोई करंट कंडक्ट करेगा नहीं करेगा. So in positive cycle anode become positive and cathode become negative and diode conducts and full input voltage is appear across RL. So in negative cycle diode doesn't conduct and there will be no voltage across RL. So like this it is converting only one half cycle to output, so it is known as half wave rectifier. Half wave rectifier. So in there is input, there is an input current and output current. So input there in output DC there will be I max by pi. There will be how this is calculated. We will discuss in different video. How average values of current DC current is calculated. It is total area under curve by total time period. So it is becomes VDC becomes VM by pi. In AC side there will be RMS. RMS will be IM by half output, and efficiency of diode will be 40.6%. Here how we will calculate efficiency I am little bit मैं थोड़ा देख सकता हूँ, लेकिन हाफ वेव आकर का एफिशिएंसी 40.6% होगा और उसका रिपल फैक्टर 1.21, that is form factor will be VDC by VSC. VSC by VDC is a form factor will be like 1 pi by 2 and 1 by form factor is equal to ripple factor, that is 1.121, 1 by form factor square minus 1 I think, that is ripple factor. ये सब बारे में आपको इतना ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एफिशिएंसी याद रख सकते हैं. एफिशिएंसी इज इक्वल टू 40.6 and TF is equal to I think ट्रांसफार्मर यूनिट फैक्टर इज इक्वल टू 0.1287. ये सब पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब हाउ मच इनवर्स वोल्टेज डायोड कैन हैंडल, दैट इज नोन एज VM. डायोड का अक्रॉस इनवर्स वोल्टेज मैक्सिमम कितना जाता है, that is VM, because in reverse cycle maximum VM voltage will be present across diode. So diode का जो inverse voltage capacity होना चाहिए वो VM से more होना चाहिए, because across diode in negative half cycle डायोड का across क्या होता है, VM पोटेंशियल होता है. हमको VM पोटेंशियल को डायोड में जब VM पोटेंशियल नेगेटिव साइकिल में डायोड का अक्रॉस आएगा रिवर्स वोल्टेज, तो डायोड का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. तो हमको डायोड का कैपेसिटी जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज VM से ज़्यादा होना चाहिए. So for that the peak inverse voltage is calculated across diode. तो इसमें ज़्यादा फिल्टर यूज़ करता है क्योंकि हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, तो there will be high AC components in what are AC components, what are DC components in output circuit. AC component मतलब AC properties. To reduce AC properties after diode circuit we use filter circuit. So here heavy filter is needed due to half wave phase rectifier. तो फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर में हम देखें क्या क्या हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में
हमारा वोल्टेज और आउटपुट, हाँ देयर विल बी हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और वेव का आधा पार्ट रेक्टिफाई नहीं होता है क्योंकि डायोड रिवर्स वाइस में होता है। तो फुल वेव में क्या होगा, दोनों साइड का वो वोल्टेज रेक्टिफाई होगा। फुल वेव रेक्टिफायर करंट फुल लोड के अक्रॉस बोथ साइकिल में रेक्टिफाई होता है, तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। आउटपुट इधर ज़्यादा होता है और रिपल इज मोर वेरी मच लेस इन देन हाफ वेव रेक्टिफायर। इधर क्या होता है, सेंटर टैप में हम दो डायोड का यूज़ करते हैं। तो सेंटर टैप रेक्टिफायर का सर्किट ऐसे है, दिस इज सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारा क्या होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में, there are two diodes connected like this and there is a transformer. This is 1:2 transformer because output is taken from the center of the secondary point. So secondary में क्या होता है, अगर output हमारा इधर से ले रहे हैं, अगर it is 1:1 transformer then voltage will be half than the input voltage. Input voltage के लिए output voltage समान करने के लिए इधर क्या होता है, सेंटर टर्म में 1:2 ट्रांसफार्मर लेते हैं और इधर 1 वोल्ट होने से इधर 2 वोल्ट होगा और हाफ हाफ में 1 वोल्ट होगा। In positive X cycle, this is positively charged, and this diode is connected in forward bias D1 forward bias due to positive side is connected and to connector side D2 is negative reverse bias. Then what happens? Forward bias diode behaves like short circuit in positive half cycle. D1 forward bias होगा और D2 negative reverse bias होगा. So then D1 is for short circuited and D2 is open circuited. Then current conducts through I1 conducts through RL1 to center tap. करंट क्या करेगा, इधर से मूव करके ऐसे सेंटर टैप में से आएगा. So if there will be input voltage like this, so there will be output voltage across R1 positive L1, positive side will be this and this. Then in across RL के across positive cycle का voltage आएगा क्योंकि there will be V voltage output across positive cycle. पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट ऐसे आएगा, D1 कंडक्ट करेगा, D2 रिवर्स वाइज करंट करेगा, तो इस साइड में कोई करंट नहीं जाएगा, उधर से करंट V जो होगा वोल्टेज इट्स विल बी रिफ्लेक्टेड अक्रॉस आउटपुट. देन इन सेकंड साइकिल व्हाट हैपेंस, दिस इज 1:2. इन सेकंड साइकिल second negative half what happens, this is negatively charged, this is positively, then D2 forward bias and D1 gets reverse bias. Then D2 forward bias and D1 reverse bias. Then the current will be conducted like this. This is short circuited and this is open circuited. Current will be like this and this. And there will be V voltage again, that is positive negative again across RL. RL का across और V voltage in negative cycle में होगा. Then cycle repeats. उस तरह cycle repeat करेगा positive half cycle और negative half cycle में. ये था फुल वेव रेक्टिफायर काउंटर टैप में कैसे काम करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड रेक्टिफाई होता है एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड रेक्टिफाई होता है. when one diode is open circuit, what is voltage across this, this is mine peak inverse voltage should be 2 vm because both the transformers voltage is across negative half cycle, then it is 2 vm. 2 vm का हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होगा. हमारा जो रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन 2 vm. सो हम फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट कैसे आता है उसको डिस्कस किया. पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 conducts and D2 open circuit. In negative half cycle D2 conducts and D1 is open circuited. How then there will be output across current flows to D2. Here current flows to D1 but in RL it is in same direction, so voltage in same direction. तो हमारा फॉरवर्ड सेंटर टेम्पर में पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट इधर D1 से आ रहा है, आउटपुट इधर D2 से आ रहा है, तो total output will be like this and load current will be like this. If there will be resistance, load current will be like this.
सो IDC कितना होगा 2 IM by इधर सब डबल हो जाएंगे रेक्टिफायर सर्किट से, तो एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी भी डबल हो जाएगा, इधर 40.6%, हियर एफिशिएंसी विल बी 81.2%. So you can see here equation, and peak inverse voltage is 2 Vm and ripple factor is 0.45. Their ripple factor was very high 1.23, here ripple factor is 0.48. And there is a full wave bridge rectifier. Full wave bridge rectifier वाली, this is another way full of rectifier. इधर center tap transformer का जरूरत नहीं है, we use 4 diodes D1 D2 arranged in series pairs, only 2 conducts per half cycle. हाफ साइकिल में दो दो कंडक्ट करेंगे. तो आप अगर फुल वेव में इधर देखते हैं, it is arranged like this, and when there is a positive cycle D1 and D2 conducts, these two conducts, and the current flows like this from positive cycle, positive side, this is positive side, and this is negative side, and negative is connected to negative. I think load is connected in between. हाँ, इधर load लगा था और इधर load is externally connected. So what happened, positive cycle D1 D2 connectors, because it forward bias में है D1 D2, तो क्या होता, करंट इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इससे जाएगा, and here से हो जाएगा. So there will be positive cycle, there will be V output across RL1 load. So positive cycle, there is a V output across load. Here two diodes conducts, and inverse voltage will be V. Peak inverse voltage will be in diode this D2D4, in there will be inverse voltage of Vm maximum. Maximum Vm का inverse voltage आएगा. तो peak inverse voltage will be Vm, and there will be like half conductors in positive cycle D1 D2 conducts, and there will be half cycle gets rectified, and the negative cycle the D3 D4 conducts, and the current D4 is forward bias, here positive negative is conducted, because negative cycle this is negative and this is positive, and this is positive and this is negative. Again D1 D3 D4 conducts, and current will move like this, positive here, 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 and here, and other two diodes get reverse biased and it gets open circuited. And here also the load the current is in same direction, so positive voltage will be same direction, and output in second cycle it is also same as V, and इसमें भी सेम वोल्टेज का आउटपुट आएगा और वो सीधा आएगा, मतलब जैसे आउटपुट आता था उधर आएगा. सो इट रेक्टिफाइज बोथ साइकिल्स, एंड अगेन साइकिल रिपीट्स, जो पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल होगा फुल साइकिल रिपीट करेगा. तो पॉजिटिव साइकिल में दो कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव साइकिल में दो डायोड्स कंडक्ट कर रहा है. वैसे ही इधर टू डायोड्स कंडक्ट्स लाइक D1 D2, and there will be like this. Here also the voltage efficiency is this, and ripple vector is same, and peak inverse voltage is different than the central tap bridge rectifier. Central tap bridge rectifier, there are two diodes used, so peak inverse voltage is equal to 2 Vm, because 2:1:2 transformer you use. Here peak inverse voltage is Vm, and also in half wave it is Vm. So uh, in center tap voltage, what is peak inverse voltage is very high, so no center tap transformer is used, so peak inverse is very low here. And disadvantage against center back, here 4 diodes are used, so there will be more voltage drop. 4 डायोड यूज हो रहा है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो सकता है, इसका आउटपुट वोल्टेज कम हो सकता है. तो दिस वाज ए सैम्पल प्रॉब्लम. This is overall comparison table of rectifiers. One is number of diodes, half wave 1, center wave 2, bridge 4, transformer not necessary. Half wave test is necessary, it is only provided for the isolation. Here center tapped, here not necessary, it is not necessary, but we can provide for isolation. The ripple factor is more, here ripple factor is less, here efficiency is less, efficiency is more.
peak inverse voltage are Vm for 2 bridge and half wave, and 2 Vm for. For this form factor and ripple frequency we will not discussing in this lecture. तो एक एप्लीकेशन के बारे में पता चल गया हमारा डायोड का जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर कैसे काम करता है, व्हाट इज हाफ वेव, व्हाट इज फुल वेव, एंड व्हाट इज सेंटर टैप्ड एंड फुल वेव सेंटर टैप्ड एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो उसको हम डिस्कस किए. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज एलईडी. LED is a semiconductor light source. When forward bias electron recombines with high poles, releasing high energy as photons, that is known as electroluminescence. इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलुमिनेंस बोलते हैं. तो क्या करेंगे हम, अगर एक डायोड को सब स्पेशल प्रॉपर्टी जो मेटल का यूज होता है, तो हम फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करते हैं, तो पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन होल होते हैं, वो रिकम्बाइन करते हैं, उसमें जो एनर्जी निकलता है वो क्या करता है, लाइट का रेडिएशन के हिसाब से निकलता है, तो फोटोन के हिसाब से एनर्जी निकालते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोलुमिनेंस कहते हैं. इस प्रॉपर्टी को यूज करके जो डिवाइस बनते हैं उसको हम LED बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डिवाइसेस. एंड कलर ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कितना होगा, बैंड एनर्जी गैप जितना होगा टू वायरलेस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जो एनर्जी गैप्स होगा सेमीकंडक्टर का, उधर रिकम्बाइन करने के जितना एनर्जी लगेगा उसको हम सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप से हम डिसाइड करेंगे, जो उनसे कलर होगा. So this will be structure of semiconductor. These are two contacts. Here P junction is there, another N junction substrate is there, and conductor is conductor, and then there will be different elements which leads to different colors. Like normal element type semiconductor do not act as LED. LED में क्या होता है, P और N जंक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करके जब हम फॉरवर्ड वाइज करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स विद रिमूवल, देयर विल बी फोटोन एनर्जी रिलेटेड. So the semiconductor is generally formed when there will be when valence band and conduction bands overlapping will be in straight. वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड का जो एनर्जी गैप है वो स्ट्रेट होगा, तो उधर हमारा एनर्जी क्या होता है, फोटोन के थ्रू डिस्क्राइब होता है. इन नॉर्मल एलिमेंटल टाइप सेमीकंडक्टर्स विद सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर्स, द वैलेंस बैंड and has more gap, so it is, and when there is a recombination, the element is provide heat energies. हीट एनर्जी से डिवाइड होता है, लेकिन इधर एनर्जी बैंड कम होने से इधर फोटोन के हिसाब से डिफरेंस करते हैं. So we use combined type semiconductor like gallium arsenide and aluminum gallium arsenide phosphorus, gallium phosphorus, gallium nitrogen, like this, silicon carbide. For different colors we use different compounds of electrolyte. You can see in this there are different colors and different range of electrolytes. तो LED का characteristics क्या है, incidence like so, here when there is a proper cathode and anode, there is conversion current flow and the recombination happens, and there is a light generator. So there will be different current flows in different color bands. Here you can see the current of different color bands, and here positive is small and shorter lead is negative. So इंस्टेंट जो लाइट होता है हमारा, उससे क्या होता है, इट इज़ वेरी लो एनर्जी कंजप्शन लाइट, लॉन्गर लाइफ टाइम से है, स्मॉलर साइज होता है और ज़्यादा रोबस्ट होता है. और कहाँ का यूज़ होता है, एविएशन में, ट्रैफिक सिग्नल में, रिमोट कंट्रोल में, और एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में हम यूज़ करते हैं LED. तो LED क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया, कैसे LED लाइट एमिट करता है. जब पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा जब हम फॉरवर्ड मैच में रखते हैं तब कंडक्ट नहीं करके उधर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बनता है ड्यू टू लेस एनर्जी बैंड. तो वो क्या करता है, जब रिकॉम्बिनेशन होता है तब हमारा जो होता है वो फोटोन के थ्रू लाइट एमिट करता है, तो उसको इलेक्ट्रोलुमिनेंस बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोलुमिनेंस का प्रॉपर्टी इस हिसाब से डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोवाइड डिफरेंट रेंज ऑफ फोटॉन्स
तो जो डिफरेंट रेंज ऑफ फोटोन्स होता है डिफरेंट एलिमेंट के हिसाब से, तो डिफरेंट कलर का लाइट प्रोवाइड करते हैं। हम एलिमेंट के हिसाब से हम रखे हैं। और क्यों एलिमेंटल कंडक्टर, क्यों एलईडी इज elementary semiconductors do not conduct shows elementary like these properties, because here semiconductor band gaps are not aligned. Here band gaps are aligned on this compound semiconductors, so energy is radiated through photon के थ्रू एनर्जी रेडिएशन होता है। तो तो हम एलईडी के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेजर डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट जेनर डायोड एंड जेनर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है रिवर्स साइज में, हाउ जेनर बिहेव्स लाइक दिस, एंड जेनर ब्रेकडाउन, वोल्टेज। तो जेनर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट जेनर डायोड के बाद हम फोटो डायोड एंड ऑप्टोकपलर के बारे में इन सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस किया व्हाट इज रेक्टिफायर, हाउ रेक्टिफायर ऑपरेट्स, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड रेक्टिफायर, व्हाट आर डिफरेंट आउटपुट्स एंड पैरामीटर्स ऑफ रेक्टिफायर्स, उसके बारे में डिस्कस किया। हाफ वेव, फुल वेव में टू टाइप, सेंटर टैप्ड और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम डिस्कस किए एलईडी के बारे में, एलईडी में क्या प्रॉपर्टीज होता है, एलईडी कैसे लाइट एमिट करती है, उसके बारे में डिस्कस किया। डिफरेंट एलईडी के बैंड गैप के लिए, डिफरेंट लाइट के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर को, उसके बारे में डिस्कस किया। और एलईडी का क्या क्या फ़ायदा होता है और एलईडी कौन से कहाँ पर यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेनर डायोड और हमारा ऑप्टोकपलर और फोटो डायोड और लेजर डायोड के हिसाब से दो उसके ऊपर मन डिस्कस करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।